Hofmann Bromamide reaction. This is a very important reaction because this reaction is frequently asked in different competitive examination and in board examination also. Therefore, we have to study this Hofmann bromide reaction with great care and in detail. When acid amide is reacting with bromine and KOH, acid amide is reduced to primary amine. This is called as Hofmann bromamide reaction. In simple way, what is reduction? When there is a removal of oxygen or addition of hydrogen in a reactant, then it is reduction. Here, when RCONH2 is being changed into RNH2, oxygen is removed. So therefore, we can say that RCONH2 is being reduced to primary amine, that is acid amide is being reduced to primary amine RNH2. This reaction is proceeding in these steps. First of all, the bromine is reacting with acid amide and H of amido group is replaced by Br atom and we get brom acid amide, which is simply called as bromamide intermediate, and HBr is formed. Now this bromamide intermediate reacts with KOH, and what happens? This K react with Br forming KBr, and hydrogen of amido group reacts with OH forming water molecule, and there remains only R and CO, and this R and CO is called as alkyl isocyanate. This alkyl isocyanate reacts again with KOH and converting alkyl isocyanate into primary amine, and K2CO3 is also formed. How it is converting? The 2H are being added at this nitrogen atom forming RNH2 and remaining 2K and 3O are giving you K2CO3. Now since there is HBr, that is acid, and alkali is there, therefore they will react again forming KBr and H2O. Now the species which are in the right hand side and the left hand side will be cancelled out, and we will get net this reaction which is similar to this reaction. Therefore we can say this reaction is being completed in these steps. Hofmann bromamide reaction, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए इसको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है और डिटेल में भी पढ़ना है. जब एसिड एमाइड ब्रोमीन और KOH से रिएक्ट करते हैं तो ये प्राइमरी एमीन में रिड्यूस हो जाते हैं. जब एसिड एमाइड ब्रोमीन एंड KOH से रिएक्ट करती है तो ये प्राइमरी एमीन में रिड्यूस हो जाती है. इसको हम हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन कहते हैं. हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इन स्टेप्स में कंप्लीट होती है. अब यहाँ एसिड एमाइड जब ब्रोमीन से रिएक्ट करती है तो ब्रोमीन का एसिड अमाइडो ग्रुप का H ब्रोमीन के Br आइटम से रिप्लेस हो जाता है और हमको यहाँ मिलता है ब्रोम एसिड एमाइड, विच इज जो कि सिंपली कहलाता है ब्रोम एमाइड, और HBr बनता है. अब ये ब्रोम एमाइड KOH से रिएक्ट करता है और यहाँ पर KBr से रिएक्ट करके KBr बना लेता है, और एक H और एक अमाइडो ग्रुप का H और एक ऑक्सीजन मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है. बाकी यहाँ रह जाता है RnCO. तो इस तरीके से जब ब्रोम एमाइड KOH से रिएक्ट करता है तो ये RnCO में कन्वर्ट होता है, जिसको हम कहते हैं अल्काइल आइसोसाइनेट. ये अल्काइल आइसोसाइनेट फिर KOH से रिएक्ट करता है और यहाँ पर 2H N से जुड़ जाते हैं और ये प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट हो जाता है. बाकी बचे 2K और 2O और 1O, ये 3 CO यहाँ पर 3O और 1 C K2CO3 में कन्वर्ट हो जाते हैं. इस तरीके से RnCO जो है वो RNH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी प्राइमरी अमीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी अल्काइल आइसोसाइनेट प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो जाता है. अब क्योंकि यहाँ पर एसिड HBr बना हुआ है और अल्कली KOH है, तो फिर आपस में रिएक्ट करके ये KBr और H2O दे देते हैं. अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो स्पीशीज कॉमन है वो कैंसिल आउट कर दी जाती हैं, तो हमें फिर नेट
ये रिएक्शन मिलती है जो कि इस दी गई रिएक्शन से सिमिलर है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है इन स्टेप्स में कंप्लीट होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। Example number 1, when acetamide is reacting with bromine and KOH, it is reduced to methylamine. In the same way, when propionamide is reacting with bromine and KOH, it is reduced to ethylamine. When benzamide is reacting with bromine and KOH, it is reduced to aniline. In all these examples, we observe that amine thus obtained by the reduction of acetamide is having one carbon atom less than that of parent acetamide. See here, there are 2 carbon atoms in acetamide. This methylamine is having only 1 carbon atom. There are 3 carbon atoms in propionamide. Ethylamine is having 2 carbon atoms. There are 7 carbon atoms in benzamide. Aniline is having 6 carbon atoms. Therefore, it is also called as, this process is also called as degradation. Degradation is process where higher carbon compound are converted into lower carbon compound. Since in Hofmann bromide reaction higher carbon compound are changed into lower carbon compound, therefore it is also degradation. Therefore Hofmann bromide reaction is also called as Hofmann degradation. It is also called as Hofmann degradation. It is also called as Hofmann degradation. ये एग्जाम्पल्स हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की। एग्जाम्पल 1 में एसिटामाइड ब्रोमीन से रिएक्ट करके, ब्रोमीन और के से रिएक्ट करके मिथाइलामीन दे रहा है, मिथाइलामीन में रिड्यूस हो रहा है। प्रोपियोनामाइड ब्रोमीन और केओएच से रिएक्ट करके इथाइलामीन में रिड्यूस हो रहा है, और बेंजामाइड ब्रोमीन और केओएच रिएक्ट करके एनिलीन के अंदर रिड्यूस हो रहा है। इन सब एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जो हमें एमीन मिल रही है, प्राइमरी एमीन मिल रही है, उसके अंदर एक कार्बन आइटम कम है अपने पेरेंट एसिड एमाइड का। यहां पर देखें एसिड एमाइड के अंदर 2 कार्बन आइटम है, मिथाइल अमीन में 1 कार्बन आइटम है। इसी तरीके से प्रोपेनामाइड में देखें 3 कार्बन आइटम है, इथाइल अमीन में 2 कार्बन आइटम है। इसी तरीके से बेंजामाइड में देखें 7 कार्बन आइटम है, एनिलीन में 6 कार्बन आइटम है। तो इस तरीके से इस रिएक्शन के अंदर हायर कार्बन कंपाउंड लोअर कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन जहां हायर कार्बन कंपाउंड लोअर कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो, उनको हम डिग्रेडेशन कहते हैं। तो इसलिए क्योंकि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में हायर कार्बन कंपाउंड लोअर कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसको हम हॉफमैन डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन को हम हॉफमैन डिग्रेडेशन भी कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। In Hofmann bromide reaction, KOH will ionize to give potassium ion and hydroxyl ion. Now this acid amide will react with bromine, where H of the amido group will be replaced by bromine atom, and we will get bromamide intermediate, and HBr will be formed. Now this bromamide intermediate, in this bromamide intermediate, the hydrogen of amido group is acidic. Why it is acidic? Because it is attached to highly electronegative nitrogen atom. Therefore it will bear slightly positive charge. Therefore it will be abstracted by OH negative. When it is being abstracted by OH negative, it will be abstracted in the form of H plus. Therefore it will leave its electron with this nitrogen atom. Therefore nitrogen atom will become more in 1 electron. But side by side Br will go in the form of leaving group Br negative, and it will also take the electron of this nitrogen atom with it. Therefore the extra electron of this nitrogen atom which was obtained from hydrogen atom will be given to Br atom, and Br will go in the form of Br negative. Therefore this nitrogen will remain neutral, and we will get this a neutral species which is called as acyl nitrene. In this neutral species acyl nitrene, this nitrogen is electron deficient. Why it is electron deficient? Because its octet is not complete. It is in position of sextet of electron. These two electron, and one is this bonded electron pair. Therefore, to complete its octet, the shifting of alkyl group will take place from carbonyl carbon to nitrogen.
and in this shifting the alkyl group will take one electron of carbon with it, and at that position this carbon will become positively charged. Therefore, to neutralize this positive charge, this pair of electron will be coming in between nitrogen and carbon, and we will get alkyl isocyanate. This alkyl isocyanate and hydrolysis will give this acid. This acid on decarboxylation will give primary amine, and in this way acid amide will be converted into primary amine. In this way acid amide will be converted into primary amine. Since here nitrene intermediate is rearranged into alkyl isocyanate, therefore it is also, this reaction is also called as Hofmann rearrangement. This reaction is also called as Hofmann rearrangement. This reaction is also called as Hofmann rearrangement. And since here bromamide intermediate is formed, therefore this reaction is also called as Hofmann bromide reaction. What is rearrangement reaction? When one molecular form is changed into another molecular form without adding anything or without eliminating anything, it is called as rearrangement. Here nitrene intermediate is converted into alkyl isocyanate without adding anything, without eliminating anything. Therefore nitrene intermediate is rearranged into alkyl isocyanate. This is rearrangement reaction. Hofmann bromide reaction की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म. तो Hofmann bromide reaction की मैकेनिज्म में KOH आयनाइज होकर K आयन देगा और हाइड्रोक्सिल आयन देगा. अब एसिड अमाइड ब्रोमीन से रिएक्ट करेगा, जहां अमाइडो ग्रुप का H ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाएगा और हमको बनेगा ब्रोमामाइड इंटरमीडिएट. क्योंकि यहां पर ये ब्रोमामाइड इंटरमीडिएट बन रहा है, इसलिए हम इस रिएक्शन को हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम हम हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन भी लेते हैं. साथ में यहाँ HBr भी बन रहा है. अब ब्रोमामाइड इंटरमीडिएट के नाइट्रोजन से जो H लगा है वो एसिडिक है. क्यों एसिडिक है? क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है. इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के करीब होगा, हाइड्रोजन से दूर होगा. जब हाइड्रोजन से दूर होगा तो हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो यहां पर OH नेगेटिव को इसको बड़ी आसानी से H प्लस के फॉर्म में बाहर ले जाएगा. जब ये H प्लस के फॉर्म में बाहर ले जाएगा तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास रह जाएगा. तो नाइट्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन उस साथ ही साथ यहाँ Br लीविंग ग्रुप Br नेगेटिव के फॉर्म में चला जाएगा. तो जो यहाँ नाइट्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था जो इसको हाइड्रोजन से मिला था वो Br नेगेटिव ले जाएगा, और यहाँ पर हमें एक न्यूट्रल स्पीशीज मिलेगी जिसको हम कहते हैं एसाइल नाइट्रीन. अब ये एसाइल नाइट्रीन में क्योंकि नाइट्रोजन आइटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ये और एक नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है. तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बोनाइल ग्रुप से जो अल्काइल रेडिकल लगा है, अल्काइल ग्रुप जो लगा है वो नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगा. अब शिफ्ट कैसे होगा कि एक इलेक्ट्रॉन तो ये अपना साथ में ले जाएगा, साथ में इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनाइल कार्बन का भी ले जाएगा. जब कार्बोनाइल कार्बन के ले जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने की कोशिश करेगा. तो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में आ जाएगा, और इस तरीके से ये एसाइल नाइट्रीन जो है वो अल्काइल आइसोसाइनेट के अंदर रीअरेंज हो जाएगा. और क्योंकि यहां पर एसाइल कार्बीन का अल्काइल आइसोसाइनेट में रीअरेंजमेंट हो रहा है, इसलिए हम इस रिएक्शन को हॉफमैन रीअरेंजमेंट भी कहते हैं. अब रीअरेंजमेंट क्या होता है? कौन सी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है? जब एक मॉलिक्यूलर फॉर्म दूसरी मॉलिक्यूलर फॉर्म में चेंज हो जाए, ना तो कुछ उसमें ऐड किया जाए ना कुछ निकाला जाए, ऐसी रिएक्शन को हम रीअरेंजमेंट कहते हैं. तो जब एसाइल नाइट्रीन जो है वो अल्काइल आइसोसाइनेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ना तो हम इसमें कुछ जोड़ रहे हैं ना इसके अंदर हम कुछ निकाल रहे हैं. ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है. अब हमें अल्काइल आइसोसाइनेट की हाइड्रोलिसिस पर हमें ये एसिड मिलेगा और ये एसिड डीकार्बोक्सिलेशन पर प्राइमरी अमीन दे देगा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन. नंबर 1, since in Hofmann bromide reaction bromamide is intermediate, therefore this reaction is also called as Hofmann bromamide reaction. Point number 2,
When in Hofmann Bromamide reaction, when acid amide is reduced to primary amine, it is having one carbon atom less than the parent acid amide. Therefore, it is also called as Hofmann degradation, because the conversion of higher carbon compound into lower carbon compound is called as degradation. As see here, acid amide when converted to primary amine, it is having primary amine is having one carbon atom less than acid amide. Therefore, it is also called as Hofmann degradation. Hofmann bromide reaction is also called as Hofmann degradation. And in the mechanism of Hofmann bromide reaction, we have seen that there is a acyl nitrene is intermediate. Acyl nitrene is intermediate. And we have also seen in mechanism of Hofmann bromide reaction that acyl nitrene is rearranged to alkyl isocyanate. Therefore, this Hofmann bromide reaction is also called as Hofmann rearrangement. So, Hofmann bromide reaction is also called as Hofmann degradation. It is also called as Hofmann rearrangement. It is also called as Hofmann rearrangement. And in Hofmann bromide reaction, nitrene is intermediate. ये Hofmann bromide reaction के कुछ खास बातें हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं. Hofmann bromide reaction में हम ये देखते हैं कि ब्रोमामाइड इंटरमीडिएट है, इसलिए इसका नाम है Hofmann bromamide reaction. Hofmann bromamide reaction में जो हमें प्राइमरी अमीन मिल रही है, वो जब Hofmann bromamide reaction में जब एसिड अमाइड रिड्यूस होकर प्राइमरी अमीन देती है, तो प्राइमरी अमीन में एसिड अमाइड से एक कार्बन आइटम कम होता है. तो हम इसलिए इसको Hofmann डिग्रेडेशन भी कहते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनिक रिएक्शन जहां पर हायर कार्बन कंपाउंड लोअर कार्बन कंपाउंड में टूटे, उनको हम डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं. हम देख लें यहां पर एसिड अमाइड जब प्राइमरी अमीन में रिड्यूस हो रहा है तो एक कार्बन आइटम कम हो रहा है. अब अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म में हम देखते हैं एसाइल नाइट्रीन इंटरमीडिएट है. एसाइल नाइट्रीन इंटरमीडिएट है, तो Hofmann bromide रिएक्शन के अंदर एसाइल नाइट्रीन इंटरमीडिएट है. अब ये एसाइल नाइट्रीन इंटरमीडिएट मैकेनिज्म में ही हम देखते हैं कि एसाइल नाइट्रीन इंटरमीडिएट अल्काइल आइसोसाइनेट में रीअरेंज हो जाता है. तो इसलिए इस Hofmann bromide रिएक्शन को हम Hofmann रीअरेंजमेंट भी कहते हैं. तो Hofmann bromide रिएक्शन को हम Hofmann डिग्रेडेशन भी कहते हैं और Hofmann रीअरेंजमेंट भी कहते हैं.